अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स के बारे में हम कुछ देखेंगे। और इससे पहले जो आपके 2 लेक्चर थे वो इनवर्टिब्रेट्स में जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं उनके बारे में थे। सो सेंसरी रिसेप्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट, इट रिफ्लेक्ट्स द एडेप्टेशन टू सेंसरी स्टिमुलस, बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। स्टिमुलस क्या होती है ये हम बहुत दफ़ा बात कर चुके हैं। इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी जो चेंज आती है उसे हम स्टिमुलस कहते हैं, उसको डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है, अदरवाइज एनिमल लाइफ जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्ट द एनर्जी मॉलिक्यूल दैट कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशंस and vertebrate receptors are of there are 2 main systems, not main 2 type of sensory receptor, but main 2 systems: lateral line system and electrical sensing, and lateral line system and mechanoreceptors। एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो टच है वो मैकेनिकल टच, मैकेनिकल जो स्टिमुलस है वो काम करती है, और दूसरी जो है उसमें इलेक्ट्रिकल चेंजेस आती हैं। तो ये 2 बेसिकली 2 सिस्टम्स हैं। अदरवाइज जो ओवरऑल हमारे पास सिस्टम है, ख़ास तौर पे फिशेस के अंदर लेटरल लाइन सिस्टम जो है ये इज वेल डेवलप्ड। इलेक्ट्रिकल सेंसर, इट इज इन द हेड and body regions of the fishes, amphibians and platypus. Fishes, amphibians से आप familiar हैं। platypus basically it's a connecting link between the reptiles and mammals, or egg-laying mammal जिसे कहते हैं। It consists of sensory pores in the epidermis, and these pores connect to canals leading to electroreceptors called ampullary organs जो उनकी body में होते हैं। Then is the mechanoreceptor is excited by mechanical pressure or distortion। Example इसकी sharks है, cyclostome, aquatic amphibians, ये सब terms से आप वाकिफ हैं। These animals contain different kinds of hair cell mechanoreceptors and neurovascular cells। And then is hearing and equilibrium, ये दोनों जुड़े हुए हैं, hearing and equilibrium। हमारा भी आपने देखा होगा कि जो हमारी हीरिंग है वो और जो हमारा ईयर है वो में बैलेंस भी हमारी बॉडी को देता है। अगर आप कहीं वर्टिगो झूले वगैरह लेते हैं, आपने देखा आपको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, आपका जो फ्लूइड है जो बैलेंस करता है ईयर के अंदर होता है, इंटरनल ईयर के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये हमारा जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का, ये भी बेसिकली हीरिंग ऑर्गन जो है वही उसको बैलेंस करते हैं। So hearing has been very important in vertebrates, and it is important in search of food and communication. Hearing and equilibrium are received by the same organ. Ear of human consists of 3 parts: outer ear है, middle ear, inner ear है, and the inner ear consists of auricles and external auditory canal. The middle ear consists of tympanic membrane. This one is the tympanic membrane, or this one is the external ear. And the inner ear components, first 2 are vestibule and semicircular canals. ये semicircular canals हैं, ये 2 जो हैं, ठीक है। और ये कॉक्लिया है, ये बेसिकली थर्ड पार्ट ये कॉक्लिया है, ठीक है। सो ये इसमें बुनियादी तौर पे 3 हिस्से हैं। फर्स्ट 2 वेस्टिब्यूल्स हैं और सेमी सर्कुलर कैनाल है, और इसके बाद कॉक्लिया है। एयर ऑफ एनिमल्स, दूसरे एनिमल जो हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के। फर्स्ट इवॉल्व इन द एम्फीबियंस, उससे पहले फिशेस वगैरह में ईयर जो है वेल डेवलप नहीं है। दे जस्ट गेट स्टिमुलस, वाइब्रेशंस वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, बट नॉट they actually hear the sounds।
Salamanders lack tympanic membrane and middle ear, so it's hard for salamanders to hear the voice. The ear of snake lack middle ear cavity. So most of the time आपने देखा होगा लोग कहते हैं कि जी सांप के कान नहीं होते, सांप तो सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है. हीयरिंग इम्पेयर्ड है, बहुत कम सुनता है और वाइब्रेशंस को ज़्यादा वो फील करता है. मिडल ईयर ऑलमोस्ट लैक करता है स्नेक्स के अंदर और रिड्यूस्ड ईयर्स हैं ज़्यादातर. मैमल्स एंड बर्ड्स है वेल डेवलप्ड ईयर्स. यस ऑफ कोर्स ये इनके अंदर जो है वो ईयर जो है वो काफ़ी डेवलप है. इसके बाद हीयरिंग एंड इक्विलिब्रियम इन वाटर. रिसेप्टर्स for equilibrium, balance and hearing are inner ear, semicircular canal in bony fishes, these are present, and some fishes lack outer or the middle ear, so vibrations may pass from water through the bone of skull to the inner ear direct. वहाँ चूँकि एक मीडिया है वाटर का, तो वो हेल्प आउट करता है इसको इस सारी सिचुएशन के अंदर. Skin sensors of the heat and cold animals के अंदर, you know, we feel cold, we feel heat, and these are all due to senses or receptors present in on the skin of animal. Thermoreceptors have bare nerve endings, and they may be present either in epidermis or dermis. बाहर इनकी जो endings हैं वो बाहर निकली हुई हैं. bare का मतलब होता है कि ऊपर कवरिंग नहीं है. There are also cold and warm spots on the skin, and cold receptors respond to temperature above skin temperature, and heat receptor respond to temperature below skin temperature. तो ये बाहर अगर गर्मी या सर्दी है तो बेसिकली स्किन जो है वो डिटेक्ट करती है टेम्परेचर को. स्किन ऑफ एनिमल कैन डिटेक्ट टेम्परेचर. रेटल स्नेक एंड पिट वाइपर्स, ये बड़े खौफनाक सांप होते हैं और आमतौर पे जो साउथ अमेरिका है वहाँ पिट वाइपर है. रेटल स्नेक वहाँ पर है. पिट वाइपर जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है और डेजर्ट वगैरह में. Have heat sensitive pits organ between eye and nostril, and these depressions are lined with sensory epithelium containing receptor cells respond to temperature of snakes different from surrounding. So snakes also use pit organ to locate warm-blooded prey. आमतौर पे जो ये चूँकि cold blooded हैं reptile हैं, तो warm-blooded prey आपने देखा है कि ये जो rodents हैं उनको आमतौर पे प्रेडेट करते हैं, sometimes birds वगैरह को, तो वो टेम्परेचर को सेंस करता है. Skin sensor of damaging stimuli. Pain receptors are present throughout the body except brain and intestine. Brain and intestine में नहीं होते. इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर हमें पेन फील नहीं होती, उसका जो सराउंडिंग टिश्यू है वहाँ पर ये होते हैं, एक्चुअल वहाँ पर नहीं होते. पेन रिसेप्टर्स आर कॉल्ड नोसिरेप्टर्स. नोसिरेप्टर्स भी लिखा हुआ है नीचे, आपने देखा होगा. They have bare nerve ending and severe heat, cold, irritating chemical elicit response from nociceptors that brain detect as pain and itching. खारिश होती है या हमें दर्द होता है तो वो बिल्कुल इन्हीं की वजह से नॉर्मली होता है. Skin sensors of the mechanical stimuli. Tactile stimuli pertaining to the touch. Tactile receptors act as a link between organisms and their environment, and mechanical sensory receptors detect mechanical sensory stimuli that brain interpret. कोई mechanical injury है उसको ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है कि क्या हो क्या रहा है और रिस्पॉन्ड क्या करना. फॉर एग्जांपल लाइट टच प्रेशर वाइब्रेशन वगैरह ये जितने भी हैं ये सब के सब जो हमारा टैक्टाइल स्टिमुलाई है वो उसको डिटेक्ट. टाइप्स ऑफ टच रिसेप्टर्स हैं. लाइट टच रिसेप्टर्स इंक्लूड बेयर नर्व एंडिंग्स एंड मीसनर्स कैप्सूल कार्पसल्स और टैक्टाइल कार्पसल्स हैं. ये खास सेल्स हैं, पॉइंट हैं जहाँ पर जो लाइट टच है उसको रिसीव किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है. पेन रिसेप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी and bulb of Ross found in dermis
of skin respond position changes. हम किस position में हैं. And Pacinian corpuscles are touch pressure receptors, also called organ of Ruffians. ये नाम है मुख्तलिफ साइंटिस्टों को जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे इनको बना. सोनार साउंड से रिलेटेड है. It is a process by which many animals can determine distance and depth by force of echolocation. Sound wave छोड़ते हैं, वहाँ से उनको पता चलता है कि जो प्रेडेटर कहाँ पर है और वो कहाँ पर लोकेट करते हैं, और सामने कोई रॉक तो नहीं है, कोई बैरियर तो नहीं है. Animals emit high frequency sound and determine how long it takes for a sound to return after bouncing of the object in the environment. Birds, dolphins, shrews, ये birds, ये उनके prey है. कोई rock भी हो सकती है, कोई wall भी हो सकती है. Also called smell, also called olfaction. Smell receptors present in the roof of nasal cavity of vertebrates. आपको पता है ये जो COVID-19 जो कोरोना वायरस है, इफेक्ट करता है, रादर अभी भी पूरी तरह गया नहीं है सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर. तो ये बेसिकली सेंसरी स्मेल रिसेप्टर्स को डैमेज करता है. These cells lie among the supporting epithelial cells. Olfactory cells vary in animals. For example, dog has 40 million olfactory cells per square centimeter. 1 square centimeter में 40 million और 1 million में आपको पता है 10 लाख सेल होते हैं. Smell perceived in animals, fishes, opening in the snout lead to the olfactory receptors. Spawning depends on olfactory. आप smell चाहिए क्यों? Smell हम जो फूड लेते हैं वो whether it is noxious, it is toxic तो नहीं है कहीं, तो उसकी स्मेल हमें बताती है. इसके अलावा केमिकल्स तो नहीं है. एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ मूव करना है कि नहीं करना है, वो स्मेल हमें बताती है. कोई अगर रॉटन एनवायरनमेंट है तो स्मेल हमें बताती है. तो स्मेल से हम डिटेक्ट करते हैं. समटाइम जो स्नेक्स वगैरह हैं, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं वो स्मेल से अपना प्रेडेटर को भी डिटेक्ट कर लेते हैं, और फूड तो करते हैं. एम्फीबियन opening through the nostrils help in search of food, mate recognition, noxious chemical detection, and in reptiles, blind ending pouches known as Jacobson organ that open into mouth are present along the olfactory epithelium. A snake takes out its tongue and strike it with the Jacobson organ in order to perceive. मुंह के अंदर बक्कल कैविटी के अंदर जैकबसन और वहाँ से ये जो बार-बार वहाँ अपनी टांग जो जुबान है लगाता है. हमने देखा है सांप जब मूव कर रहा होता है बार-बार अपनी जुबान निकाल रहा होता है, तो उसके जो सेंस ऑफ स्मेल है उसके माउथ के अंदर. In birds, external nares open near the beak, and olfactory epithelium is fully developed. Vulture is exception. वहाँ चूंकि उनने vulture ने मुर्दार खोर है तो उसकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो कम है. In mammals, nose for smell. Taste, also called gustation. Receptors of taste are chemoreceptors. They are present in mouth or throat surface of mammalian tongue covered with small protuberances called papillae. वो उभार हैं छोटे-छोटे. Bumpy texture of the tongue is due to papillae. Taste buds are barrel-shaped chemoreceptors called gustatory cells. Taste bud present in crevices between the papillae. Papillae के दरमियान जो दरारें बनती हैं वहाँ पर है. Taste pore हैं extending from the receptors or gustation here that open through small openings called the taste pores. Taste sensation. There are 4 taste sensations: sweet, sour, acids, sugar sweet, bitter, alkaloids, salty, electrolytes. Location of taste bud की आपने याद रखना है students. Sweet, sour, bitter, salty, sweet, sugar से होती है, sour, acid से है, bitter, alkaloids हैं, salty, electrolytes हैं. Location of taste buds in different animals. Mammals in their mouth, reptiles in pharynx, birds in pharynx,
Fishes on skin, for example, sturgeon have taste buds in roof, on side walls, and aquariums. These help in monitoring the flow of water. Then is a vegan, which is very important. You can say receptors. Most of the species have eyes. For vegan, eyeball consists of lens, sclera, choroid. Inner retina consists of photoreceptors, transparent cornea, colored iris. ये इसके part हैं इसके से. Cornea along with sclera cover the front of eyeball, and iris is endowed with light screening pigment made up of circular smooth muscles controlling the amount of light entering the pupil. आंख के अंदर कितनी लाइट जा रही है उसको ये सर्कुलर स्मूथ मसल्स कंट्रोल करते हैं. A fluid-filled posterior and anterior chamber between the lens and cornea, and lens is behind the iris. Conjunctiva, mucous membrane that covers the eyeball, इसको conjunctiva कहते हैं. और accommodation process of focusing light rays precisely on retina. आप अपनी आंख को कभी बंद करते हैं, कभी ज्यादा खोलते हैं, फोकस करने की कोशिश करते हैं. लाइट जैसे आप दरवाजे से कमरे से बाहर निकलते हैं, बहुत ज्यादा तेज लाइट, तो आप अपनी आंख को बंद कर लेते हैं. डार्क रूम में जाते हैं तो आप आंखें जरा खोल के, जैसे कहते हैं आंखें फाड़ के देखते हैं. तो यू आर एडजस्टिंग द लाइट एंटरिंग द आई. So stretching and relaxation of muscles and fibers is coordinated in vertebrates. So eye of the vertebrate fishes, lidless, rounded, and close to retina. इसमें lid नहीं है, covering नहीं है, ठीक है, round है. Focusing require moving lens forward and backward. Amphibian side feeders देख के इनकी आंखें develop हैं. Binocular vision in neurons, दोनों आंखों से देखते हैं. Help in depth perception for capturing prey. Salamanders lack binocular vision. हर आंख अलग अलग देख रही होती है. Nictitating membrane clean the eye क्योंकि बहुत सारे burrowing हैं. Reptiles upper and lower eyelids, blood sinus, nictitating membrane clean the eye. blood जो है वो भी साफ करता है eyes को. Median eye developed from the roof of the tectum or the midbrain. For example, Totara, हमने जब पढ़ा था तो आपने देखा था. Median eye with complete lens, nerve and retina. जरूरी नहीं है कि median eye जो तीसरी आंख है इससे ये अब functional नहीं है, लेंस है, nerve भी है, retina भी है, लेकिन उतना ही पॉइंट है. तो ये एक ही ग्रुप है टाटारा, ये न्यूजीलैंड वगैरह पाया जाता है. तो उसमें ये मीडियन आई या सर के दरमियान में आंख डेवलप हुई है. थर्ड है बर्ड्स. डबल फोकसिंग मैकेनिज्म हेल्प इन इंस्टेंट कैप्चर ऑफ द प्रे. ये दोनों तरह से उसका साइज छोटा करके भी लेंस को आगे पीछे करके फोकस कर लेते हैं. वर्टिब्रेट आई. रॉड्स एंड कोन्स आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्रेट आई. रॉड्स आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. Cones respond to height and intensity of light and involved in color perception. याद रखना रॉड जो हैं वो लाइट को और ये ब्लैक एंड व्हाइट विजन को कंट्रोल करते हैं, और कोन्स जो हैं वो कलर. सी से कोन से कलर याद रखिएगा. Generator potential triggers by the rhodopsin in rod cells which absorb light, and when photoreceptors are not stimulated, vitamin A and ATP convert rhodopsin to light sensitive form. Retinal nerve translate relative amount of light that cones absorb. Generator potential that are then transmitted as nerve impulse to brain, where overall sensation of the sight is perceived. That is why vitamin A is necessary for proper entry of light or proper sensitivity of the rod cells. So thank you very much. This is all about communication 1, और hope आप साथ साथ याद करते जा रहे होंगे, और इसका क्वेश्चन आंसर बहुत जल्दी हम शुरू करने वाले. मैं बार बार आपसे कहता हूँ बी रेडी फॉर द एग्जाम, और क्योंकि अब जो है वो कॉलेजेस खुलने के चांसेस काफ़ी बन रहे हैं. सो इसलिए इसको पिछले लेक्चर्स को भी देखते रहिए, और नेग्लिजेंस जो होगी वो आप लोगों की तरफ से होगी.
then you must be ready for that. Thank you very much.